Okay, let us continue with our chapter cost sheet. Question 1 is completed, 2 completed, 3 completed, 4 completed. ये question 5 का cost sheet homework बनाया तुम लोगों ने. What is the answer? Profit. Question 5 में you must have calculated 75,020. चलो 56 plus 13,013. Yes, 13,000 is correct. क्वेश्चन 6 इज कंप्लीटेड. 7 आज करेंगे. 7 और 8 दो ही क्वेश्चन बाकी है. ठीक है, चलो कम टू थियरी. हम लोग ने जो थियरी लिखा था ना, वी हैव लेफ्ट सम स्पेस फॉर थियरी, उसमें आ जाओ. नॉट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ, उसके भी पहले. आई थिंक वी हैव लेफ्ट सम स्पेस बिफोर दैट ऑल्सो. आफ्टर दिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक्सप्लेनेशन, उसके नीचे वी विल कंटिन्यू विद दिस थियरी. व्हाट वी हैव रिटन हियर, इस थियरी में फर्स्ट वी स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हम लोग ने पढ़ा हुआ है. देन वी स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रेसेबिलिटी. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. सो वी आर नाउ गोइंग टू क्लासिफाई द कॉस्ट according to the behavior of cost. Yes, let us classify the cost according to the behavior of cost. First, let us see according to behavior of cost, cost can be classified as which cost and which cost. So according to behavior of the cost, cost can be classified as variable cost and fixed cost. So according to behavior of cost, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए I am taking an example. Okay, now to explain variable cost and fixed cost का concept, I am taking an example. ये example से हम लोग conclude करेंगे कि what is variable cost and fixed cost. Whatever we are studying right now, that is variable cost, fixed cost, ये will be required till last chapter. So this is one of the most important classification of this subject. Second most important classification of this subject. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इसके ऊपर जो हम लोग ने क्लासिफाई किया था कॉस्ट, दैट इज एज पर ट्रेसेबिलिटी, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एंड दिस इज अ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. मतलब ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में यू विल हैव वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. सो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मैंने ये एग्जाम्पल लिया. तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल लेते हैं. से फॉर एग्जाम्पल I have taken this example. Say company is manufacturing 5,000 units. अब units मतलब से for example company is manufacturing 5,000 pens. तो 5,000 pens बना रहे हैं. तो can you tell me pen बनाने के लिए what is the raw material required? पेन बनाने के लिए नॉर्मल आपके हाथ में जो भी पेन है वो आप देख लो. Tell me what is the raw material required for manufacturing pens? You will have that plastic body.
देन यू हैव रीफिल, देन यू हैव कैप, फिर वो ऊपर का ढक्कन, नीचे का ढक्कन, इफ इट इज वो ग्रिप वाला पेन तो उसका रबर. दिस इज ऑल द रॉ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर वन पेन. एक पेन बनाने के लिए ये सब रॉ मटेरियल चाहिए. नाउ सपोज फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 5 रुपीज. ये सब प्लास्टिक बॉडी, रीफिल, कैप, ऊपर का कैप, नीचे का कैप, एक्सेट्रा, ऑल दैट इज 5 रुपीज. सो हाउ मच विल बी आवर टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट? सो इट इज वेरी सिंपल मल्टीप्लीकेशन. वन पेन का 5 रुपीज है तो टोटल 5000 पेन्स का रॉ मटेरियल कॉस्ट विल बी 25,000. नाउ से फॉर एग्जाम्पल कंपनी का प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड from 5,000 or rather increased from 5,000 to 8,000 pens. Suppose company का production has increased from 5,000 to 8,000 pens. So can you tell me raw material में which of the two will remain same? Total cost of raw material will remain same, or cost per unit of raw material will remain same, or will both remain same, or will both change? Cost per unit will remain same. Cost per unit will remain same. See, it is common sense. कंपनी एक पेन बनाएगा, कंपनी विल मैन्युफैक्चर 10 पेन्स, कंपनी विल मैन्युफैक्चर 50 पेन्स, कंपनी विल मैन्युफैक्चर 500 पेन्स, 1000, 2000, 5000 या 8000. एवरी पेन रॉ मटेरियल तो 5 रुपीज का ही डालेगा. ऐसा थोड़ी है कि एक पेन में रिफिल नहीं डालेगा, एक पेन में प्लास्टिक का बॉडी नहीं डालेगा, एक पेन में कैप नहीं डालेगा, एक पेन में प्लास्टिक का वो या रबर का ग्रिप नहीं डालेगा. एवरी पेन इट विल पुट रॉ मटेरियल ऑफ 5 रुपीज. So 5 rupees per pen will remain constant. So what will happen to total raw material cost? 5,000 pens pe total raw material cost is 25,000. So 8,000 pens pe total raw material cost will become how much? 40,000. Okay. Now if the company's production, अगर number of units, इसको हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स भी बोल सकते हैं. इफ नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीज फ्रॉम 8,000 टू 3,000, सपोज कंपनी का प्रोडक्शन कम हो गया, 8,000 से 3,000 हो गया, अगेन व्हाट विल रिमेन सेम? कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम. कॉस्ट पर यूनिट विल स्टिल रिमेन 5 रुपीज. and now what will happen to the total raw material cost? Total raw material cost will become 15,000. So now the question arises, raw material का जो cost है is what in behavior? So raw material का cost is perfectly variable in behavior. In my example, look at the example, look at the figures. To demonstrate this, मैंने raw material cost का example लिया है. We conclude कि raw material का cost is perfectly variable cost. Perfectly variable cost का I will give you two characteristics. So दोनों characteristic ध्यान से सुनो. First characteristic of perfectly variable cost is what will remain constant. Cost per unit will remain constant. However, this statement is incomplete. Let me complete this statement. Perfectly raw material cost is that cost whose cost per unit will remain constant irrespective of changes in the number of units. मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होने के वजह से कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगा. कॉस्ट पर यूनिट एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से चेंज हो सकता है. व्हाट इज एक्सटर्नल फैक्टर? फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन. मेरा सप्लायर मेरे को बोलता है रॉ मटेरियल कॉस्ट नेक्स्ट ईयर से बढ़ गया, बट दैट इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट इज नॉट ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर नीचे होने के वजह से कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होता है. दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज परफेक्टली वेरिएबल कॉस्ट. यू कैन सी हाउ द कॉस्ट इज बिहेविंग.
परफेक्टली वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट पर यूनिट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, लेकिन what is happening to the total cost? You can check what is happening to the total cost. अगर number of units is increasing, total variable cost also increases. मतलब total variable cost is having direct relationship with the number of units. नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उसके साथ बढ़ेगा. एंड अगर नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीजेस, if number of units decreased from 8,000 to 3,000, what happened to the total variable cost? वो भी डिक्रीज हुआ है. That is how variable cost behave with the change in number of units. That is why this is classification according to the behavior of cost. हम ये चेक कर रहे हैं कि ये cost कैसे behave करता है. So variable cost में cost per unit does not change because of change in number of units. मेरा number of units change होने की वजह से cost per unit will not change. But what will happen to total variable cost? Total variable cost will increase with the increase in number of units and decrease with decrease in number of units. It is direct relationship. This is classical example of perfectly variable cost. If you ask me which cost is perfectly variable throughout the subject, not only this chapter, not only this example, raw material cost is always perfectly variable. I will give you our example. For example, textbook ka cost for us is variable cost because cost per student textbook remains constant. Every student ko, say for example in inter we will give you say for example 9 textbook, तो every textbook का cost per student हमारे लिए constant है. टोटल टेक्स्ट बुक का कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो टोटल टेक्स्ट बुक का कॉस्ट भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो टोटल टेक्स्ट बुक का कॉस्ट भी कम होगा. बट पर स्टूडेंट को से फॉर एग्जांपल हम लोग पर स्टूडेंट इंटर में 2,000 रुपीज का टेक्स्ट बुक देते हैं. सो एवरी स्टूडेंट कॉस्ट पर टेक्स्ट बुक इज 2,000. सो फॉर अस टेक्स्ट बुक का कॉस्ट इज परफेक्टली विच कॉस्ट? वेरिएबल. सो perfectly variable cost में actually you have to remember 3 points, but right now you remember 2 points. Third point I will explain, but right now 2 points हम लोग को याद रखना है. Number 1, any cost, how to identify, because sometimes question में हमको identify करने का, थोड़ी देर बाद हम लोग एक sum करेंगे जिसमें we will have to identify कि whether this is perfectly variable or whether this is perfectly fixed. So how to identify whether the cost is perfectly variable? Fixed cost, so anyways we have not yet started. But how to identify any cost is perfectly variable? What remains constant? Irrespective of changes in number of units, cost per unit will remain constant. Chalo, now I have taken second example is of factory rent. Just example, don't focus on figures. Figures may be more or less. चलो, I have taken factory rent, total is 25,000, per unit is 5, number of units is 5,000. तो जब मैं 5,000 पेन्स बना रहा था ना, तो मेरा total factory rent was 25,000. Now I increased my production from 5,000 to 8,000. Can you tell me in case of factory rent what will remain same? Factory rent में क्या same रहेगा? 25,000 will remain same कि 5 rupees will remain same? 25,000 will remain same. Factory rent is perfectly fixed cost. It is a fixed cost. I will give you example. Rent of this premises is 4 lakh rupees per month. ये दोनों माला मिला के rent of the premises is 4 lakh rupees per month. Now इसमें 4 स्टूडेंट बैठे हैं या ये पूरे क्लास में 400 एडमिशन या 40 एडमिशन रहेगा, 4 lakh will remain constant. Yes or no? We are not paying rent per student. I am paying rent per month. We are paying rent what?
पर मंथ, 4 लाख रुपीस पर मंथ। वो लैंडलॉर्ड इधर देखने भी नहीं आया है, ये लैंडलॉर्ड इधर, ये नीचे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का लैंडलॉर्ड, नीचे सेकंड फ्लोर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म है, उसका जो वो है ना, वही उसका लैंडलॉर्ड है। वो सिंपल है, वो बोलता है पर मंथ इतना चेक आना चाहिए, नहीं तो बाहर ताला मार के चला जाएगा। वो है एक चाबी उसके पास ही रहता है, बोलता है रेंट इतना आना चाहिए। वो देखने भी नहीं आया एडमिशन कितना है, उसने थोड़ी एक आदमी खड़ा रखा है चेक करने के लिए, चेक करो एक स्टूडेंट का 500 रुपया रेंट, दूसरा स्टूडेंट का 500 रुपया रेंट। रेंट ऑफ दिस प्रीमाइसेस इज फॉर अस परफेक्टली विच कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। वो बाहर मैडम बैठा है, उधर एक आदमी बैठा है, वो लोग का सैलरी फॉर अस इज विच कॉस्ट, परफेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट, डजंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एडमिशन। कितना भी नंबर ऑफ एडमिशन रहेगा, मैं 5000 पेन बनाऊं कि 8000, फॉरगेट अबाउट दिस एग्जांपल। प्रैक्टिकली सोचो, practically for us, I can give you 2 live examples. In our case, rent of this premises is perfectly fixed cost. We have not taken this rent, or we have not purchased this premises, we have taken this premises on rent. तो ये रेंट का कॉस्ट हमारे लिए फिक्स कॉस्ट है। 4 लाख रुपए पर मंथ का चेक जाता ही है। टोटल रेंट इज समवेयर अराउंड 52 lakhs पर एनम ऑफ दिस प्रीमाइसेस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एडमिशन। अब इसमें 1000 एडमिशन रहेगा कि 200 एडमिशन रहेगा, लैंडलॉर्ड को कुछ लेना देना नहीं है। तुमने प्रीमाइसेस लिया है, हर महीने 4 लाख रुपए का रेंट आना चाहिए। सो फैक्ट्री रेंट इज परफेक्टली विच कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। So how can you say any cost is perfectly fixed cost when what remains constant? Total cost will remain constant irrespective of changes in the units. Units change होने की वजह से total cost change नहीं होगा. Yes, it can change because of external factor. The landlord has not given us this premises for lifetime for 4 lakh rupees. उसने पूरा लाइफ के लिए हमको 4 लाख रुपए मैंने दिया है। एवरी ईयर थोड़ा इंक्रीमेंट होता है रेंट में, 5%, 2%, 10%, वट एवर, डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द बार्गेनिंग पावर ऑफ अस, या उसका बार्गेनिंग पावर, किसको ज्यादा जरूरत है। बोलेगा नहीं हर बरस 2 साल 2%, 5% तो इंक्रीमेंट होगा ही। सो ये साल का रेंट 4 लाख, नेक्स्ट ईयर का 4,20,000 एग्जाम्पल। तो अगर दैट इज द रेंट का अमाउंट चेंजिंग नॉट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एडमिशन ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ वॉट, एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज इन्फ्लेशन। हर कॉस्ट हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन राइट नाउ। जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन नंबर ऑफ यूनिट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट में क्या सेम रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या सेम रहेगा, टोटल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। दैट इज हाउ the cost will behave with the change in output. There are certain costs which do not change with the change in output. They are fixed cost. मैं 5,000 बनाऊं, मैं 8,000 बनाऊं, या मैं 3,000 बनाऊं, मेरा रेंट will remain how much rupees? 25,000. Rent, see whether you understand this statement. Rent is function of time and not function of units. मैं घर पे बैठेगा ना तो भी रेंट 25,000 है। हम लोग ने प्रीमाइसेस बंद करके बैठे ना तो भी मेरे को रेंट तो भरना ही पड़ेगा। सो रेंट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ परफेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, नाउ लेट अस डू मैथमेटिकली हाउ टू कैलकुलेट पर यूनिट। यहाँ पे पर यूनिट कैसे ढूंढेंगे, 25,000 शुड बी डिवाइडेड बाय 8,000, सो डिवाइड 3.125 and divide 25,000 divided by 3,000, 8.3333 recurring। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन है, फिक्स्ड कॉस्ट या परफेक्टली फिक्स्ड कॉस्ट में व्हाट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, टोटल कॉस्ट। नाउ हाउ डज कॉस्ट पर यूनिट बिहेव, हाउ इज कॉस्ट पर यूनिट बिहेविंग। सो इफ नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेस, what happens to cost per unit, decreases. If number of units decreases, cost per unit increases. This is how fixed cost per unit behaves with the changes in the output. However, total fixed cost will remain constant. Factory rent is, again I am saying, classical example of purely fixed cost. ये दोनों है ना, रॉ मटेरियल इज प्योरली वेरिएबल,
पूरे सब्जेक्ट में रॉ मटेरियल कॉस्ट कभी फिक्स्ड हो ही नहीं सकता है. आई कैन नॉट से कि मैं 5,000 बनाऊं कि 8,000 बनाऊं, मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट तो सेम है. हाउ इज इट पॉसिबल? बट फिर रेंट में मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं 5,000 बनाऊं, मैं 8,000 बनाऊं, मैं 3,000 बनाऊं, या मैं घर पे बैठूं, मेरा रेंट तो 25,000 पर मंथ तो मेरे को देना ही पड़ेगा. सो दिस टू आर क्लासिकल एग्जांपल. रॉ मटेरियल इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ परफेक्टली वेरिएबल एंड फिक्स्ड. फैक्ट्री रेंट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ परफेक्टली फिक्स्ड. ओके, पहले ये एग्जांपल कॉपी करो, उसके बाद हम लोग नोट्स लिखेंगे इसके बारे में. उसके नीचे गिव द हेडिंग, एक लाइन छोड़ के. अच्छा, बाय द वे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इफ नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेस, यहाँ पे जस्ट मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. नंबर ऑफ यूनिट्स डिक्रीजेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेस. डायरेक्ट रिलेशनशिप. एंड लाइकवाइज फिक्स्ड कॉस्ट में तो टोटल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट. व्हाट हैपेंस टू द कॉस्ट पर यूनिट? नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीजेस, कॉस्ट पर यूनिट decreases. So it is inverse relationship. Give the heading variable cost. Next line में लिखो cost per unit variable cost. Underline that. Next line point number A B C करके लिखो या 1 2 3 करके लिखो. Cost per unit remains constant. Cost per unit remains constant irrespective of changes in level of activity, irrespective of changes in level of activity or output, irrespective of changes in level of activity or output. नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल कॉस्ट changes, total cost changes in the same proportion
total cost changes in the same proportion and in the same direction. Total cost changes in the same proportion and in the same direction to the changes in the level of activity, to the changes in level of activity or output. इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में लिखो दैट इज आउटपुट इंक्रीजेस कॉमा टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. ये लिखा. Now leave one line, then write down fixed cost. Give the heading fixed cost. Next line, write down these costs are those which are incurred for a particular period. For a particular period. And लिखने के बाद come to next line compulsorily. Total cost comma for that period comma remains constant irrespective of changes in the level of activity or output. Next point, cost per unit is inversely proportionate to the level of activity or output. इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में लिखो दैट इज आउटपुट इंक्रीजेस comma cost per unit decreases. And vice versa.
चलो आई विल गिव यू एग्जांपल. आप मुझे बताओ वेदर इट इज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कौन, इलेक्ट्रिसिटी इफ यू से इज वेरिएबल. अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरिएबल, इट मीन्स इफ यू डोंट यूज इलेक्ट्रिसिटी इन अ पर्टिकुलर मंथ, बिल विल बी जीरो. इज इट पॉसिबल? नो. सेकेंड, इफ यू से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब डस इट मीन कि एवरी मंथ में इलेक्ट्रिसिटी का बिल इज सेम? सो इलेक्ट्रिसिटी इज नाइदर perfectly variable nor it is perfectly fixed. So there is a third category and that is called as semi-variable cost. Semi-variable cost means it is having a variable portion and it is having a fixed portion. उसके अंदर एक वेरिएबल पोर्शन होता है और उसके अंदर एक फिक्स्ड पोर्शन होता है. कभी अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा के देखो, उसमें जो भी टोटल अमाउंट रहेगा, सपोज योर बिल अमाउंट इज 1900, तो 1900 में से आप देखोगे ना, तो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज फिक्स्ड मंथली रेंटल. वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो या नहीं करते हो. And there will be a variable portion which depends on usage. आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ज्यादा वेरिएबल पोर्शन आएगा. एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा. सो वेरिएबल, सेमी वेरिएबल का सिंपल मीनिंग क्या है? इट इज नाइदर परफेक्टली वेरिएबल, क्योंकि अगर वो परफेक्टली वेरिएबल है तो व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? कॉस्ट पर यूनिट. नॉर परफेक्टली फिक्स्ड, क्योंकि अगर वो परफेक्टली फिक्स्ड है तो व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? टोटल कॉस्ट. इलेक्ट्रिसिटी में बोथ इज नॉट पॉसिबल. आप चेक कर रहे हैं ना अपने घर पे जाके, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ ऑफ योर हाउस इज डिफरेंट. दैट मीन्स इट इज नॉट परफेक्टली फिक्स्ड. बिकॉज अगर वो परफेक्टली फिक्स्ड है तो एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेम आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है. अनलेस आपने मीटर में सेटिंग कर दिया तो वो पॉसिबल है, बाकी ऐसे तो पॉसिबल नहीं है. एंड नॉर कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट. इट इज सेमी वेरिएबल. राइट डाउन, एक लाइन छोड़ के गिव द हेडिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट. राइट डाउन सेमी वेरिएबल कॉस्ट. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन these costs are partly variable and partly fixed. नेक्स्ट लाइन में लिखो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस नेक्स्ट लाइन में लिखो और अदर कंटिन्यू राइटिंग कॉमा टेलीफोन एक्सपेंसेस comma repairs and maintenance. Chalo, I am taking this particular question. This is a very small question but a good question. इसके अंदर हम लोग को ये वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल का पॉइंट बहुत अच्छे से बैठ जाएगा. What you do is, at present आप इसका फोटो खींच के रखो. टेक पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन योर मोबाइल. इसका फोटो ले लो. आपके टेक्स्ट बुक में या जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया उसमें फिलहाल नहीं है. Whenever you will get the textbook, we will locate कि वो क्वेश्चन कहाँ पे है. Okay, I am reading this question. Company produced uniform type of product and it has a manufacturing capacity
of 3000 units per week of 48 hours. From the records of the company, the following data are available relating to output and cost of 3 consecutive weeks. So now they have given you week number 1, 2 and 3. Week number 1, units manufactured is 1200. Week number 2, units manufactured is 1600, and week number 3, units manufactured is 1800. Then for every week they have given you direct material. For week number 1 9000, week number 2 12000, week number 3 13500. डायरेक्ट वेजेस लाइकवाइज आपको दिया हुआ है फॉर वीक नंबर 1, 2, 3 3600, 4800 एंड 5400. And factory overheads likewise is given for week number 1, 2 and 3 31,000, 33,000 and 34,000. Assuming that the company charges profit of 20% on selling price, what we are supposed to find out is the selling price per unit when the weekly output is 2000 units. So simple language में what they are asking us to find out, they are asking us to find out what will be the selling price per unit if the company produces how many units, 2000 units. So you can say कि हम लोग को say for example week number 1, 2, 3 already हो चुका है. There are 3 weeks which are already completed. अब हो सकता है next week में कोई कस्टमर आया और हमको बोलता है हमको 2000 यूनिट्स बना के दो. तो my question is, or the question is, they are asking you what will be the selling price per unit of the 2000 units. That is what we are supposed to find out. चलो, now one by one, can you look at this table and tell me, only focus on this table. ये table के बाहर मत जाओ. In this table, they have given us information about 3 weeks. Week number 1, week number 2 and week number 3. Week number 1 में how much was the units manufactured? कितना units week number 1 में बनाया? 1200. Week number 2 में week number 2 1600 and week number 3 1800. Now first I will take up direct material. See here, direct material week number 1 is 9000, week number 2 is 12000, week number 3 is 13500. Now direct material मुझे find out करना है is what in behavior. So can you prove whether direct material is variable or whether direct material is fixed? देखो, अगर डायरेक्ट मटेरियल फिक्स्ड होता तो तीनों वीक का टोटल अमाउंट वुड हैव बीन सेम, बट इट इज नॉट सेम. अब हम क्या चेक करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट कितना है. सो हाउ विल यू कैलकुलेट पर यूनिट फॉर वीक नंबर 1? 9000 विल बी डिवाइडेड बाय 1200. सो डिवाइड करो, 9000 डिवाइडेड बाय 1200, 7.5. नाउ चेक वीक नंबर 2. वीक नंबर 2 के लिए यू विल डिवाइड व्हाट बाय व्हाट? 12000 डिवाइडेड बाय 1600. बोलो कितना आता है? 7.5. चेक फॉर वीक नंबर 3, 7.5. तीनों वीक में डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट इज कांस्टेंट. व्हाट इज द कंक्लूजन? देयरफॉर perfectly variable cost. Why it is perfectly variable cost? Cost per unit is constant. So we conclude direct material is what? Perfectly variable. तो जब आप 2000 यूनिट्स बनाओगे तभी भी डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट कितना रहेगा? 7.5. बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल इज परफेक्टली वेरिएबल. कैन यू चेक डायरेक्ट वेज? Direct wages is also what? How did you conclude it is perfectly variable? What is the test that we will apply? Simple test है हम लोग को total cost check करने का. तो direct wages का total cost every week is not same. Week number 1 it is 3600, week number 2 4800, week number 4 rather 3 it is 5400. क्योंकि अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट होता तो तीनों वीक में 3600 होता, अगर ये फिक्स्ड होता तो तीनों वीक में 5400 होता, बट इट इज नॉट सेम. बट यू कैलकुलेटेड पर यूनिट एंड तीनों वीक में पर यूनिट इज हाउ मच रुपीज?
3. So what we conclude, like we concluded in direct material, we conclude the same in direct wages, that direct wages is also perfectly variable. तो जब आप 2000 यूनिट्स बनाओगे तभी भी डायरेक्ट वेजेस विल बी 3 रुपीज पर यूनिट. ओके, तो पहले हम लोग इतना लिखते हैं, बाद में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का बात करेंगे. चलो राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. टोटल हम लोग 4 पॉइंट लिखने वाले हैं इसके अंदर. पॉइंट नंबर 1, give the heading direct materials. Underline that. Next line, write down. Cost per unit equal to total cost divided by number of units. So next line, write down week 1, 9000 divided by 1200 units. Same line equal to 7.5 per unit rupees. 7.5 per unit. Chalo next. Week number 2, likewise, show the calculation. Again, you should get 7.5 per unit. Week number 3, 13,500 divided by 1800. Same line equal to 7.5 per unit. Next line, write down since cost per unit is constant in all 3 weeks. Since cost per unit is constant in all 3 weeks, comma, next line, compulsorily, comma करके next line, direct material is perfectly variable. Direct material is perfectly variable in behavior. Leave one line, continue writing. After leaving one line compulsorily छोड़ना है. Can you tell me, we want to find out direct material for how many units? 2000. So लिखो, therefore direct material for 2000 units. Therefore direct material for 2000 units. Next line equal to, chalo, anybody can explain calculation, how much into how much? 2000 into 7.5 is equal to rupees 15,000. चलो, जैसे मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिखवाया है, सेम वे यू राइट फॉर डायरेक्ट वेजेस. Direct wages per unit you should get 3 rupees.
एंड फॉर 2000 यूनिट्स हाउ मच यू आर गेटिंग 6000, तो ये 2000 का हो गया यूनिट्स का. ओके, नाउ लीव वन लाइन. नाउ राइट डाउन पॉइंट नंबर 3, विच इज द थर्ड कॉस्ट जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेस, आफ्टर दैट विच इज द थर्ड कॉस्ट दैट इज गिवन? फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो गिव द हेडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. सबसे पहले I want to verify whether factory overheads is perfectly variable or whether factory overheads is perfectly fixed. So what is the test that we should apply to find out whether factory overheads perfectly variable है या factory overheads perfectly fixed है? Perfectly fixed तो ये नहीं है. Why it is not perfectly fixed? Because अगर factory overheads perfectly fixed होता तो every week our total amount would have been same. Suppose ये तीनों वीक में 31,000 होता, 31,000 वीक नंबर 1, 31,000 week number 2 and 31,000 week number 3, then we would have easily concluded that factory overheads is perfectly fixed. Now what is the test that we should apply to check whether factory overheads is perfectly variable or not? तो उसके लिए हम लोग ने जैसे मटेरियल एंड लेबर में किया वैसे हम डिवाइड करके चेक करेंगे. मतलब हम कॉस्ट पर यूनिट चेक करेंगे. अगर कॉस्ट पर यूनिट तीनों वीक में सेम हुआ तो दिस इज ऑल्सो परफेक्टली वेरिएबल. तो चेक करो. इनफैक्ट चेक क्यों करना है, लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन वीक नंबर 1 और वीक 1. जैसे हम लोग ने मटेरियल एंड लेबर में लिखा है वैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में राइट डाउन वीक 1. सेम लाइन इक्वल टू 31,000 divided by 1200. Same line equal to, yes, what is the amount? Rupees 25.83333. 33 recurring. Okay, take next line week 2. Week 2. $33,000 divided by 1600. बोलो कितना? 20.625. Okay. Likewise, divide 34,000 divided by 1,800. 18.8888. तीनों में लिखो पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट. रुपीज 25.8333 पर यूनिट, रुपीज 20.625 पर यूनिट and rupees 18.8888 per unit. Okay, so can you tell me, we have enough evidence to conclude factory overheads is neither perfectly fixed nor perfectly variable. क्योंकि अगर ये perfectly fixed होता तो तीनों वीक में टोटल कॉस्ट सेम होता, और अगर ये perfectly variable होता तो तीनों वीक में कॉस्ट पर यूनिट would have been same. So write down एक लाइन छोड़ के, neither total cost is constant, neither total cost is constant nor cost per unit is constant. Next line, it means, comma, it means, comma, it is neither perfectly fixed it means it is neither perfectly fixed nor perfectly variable.
Okay, so what does that mean? It is semi-variable. Next line write down. It means it is partly fixed and partly variable. और एक बार नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट मीन्स इट इज सेमी वेरिएबल. ओके, नाउ सी योर, जो भी मैं कैलकुलेशन आई एम एक्सप्लेनिंग, दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस सम, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, बट इट इज फॉर द एंटायर सब्जेक्ट. ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, यू विल और यू मे रिक्वायर इन चैप्टर नंबर 14 ऑल्सो, यू मे रिक्वायर दिस इन सर्विस कॉस्टिंग ऑल्सो. किसी भी चैप्टर में ये कैलकुलेशन काम आ सकता है. सो वंस एंड फॉर ऑल ये कैलकुलेशन सीख लो. डिस्पाइट ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस कैलकुलेशन, डोंट नो, स्टूडेंट टेंड टू फॉरगेट दिस, बट ये फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, ये 31,000 is factory overheads, that we know. Week number 1 it is 31,000, week number 2 it is 33,000, and week number 3 you can check it is 34,000. I hope you understand and you agree कि ये जो 31,000 है, I am calling it as total factory overheads. When I say total factory overheads, it means this 31,000 is, just now हमने लिखा partly variable, partly fixed. This 33,000 is also what? Partly variable, partly fixed, and ये 34,000 is also partly variable, partly fixed. Have you understood this much? Now ध्यान से सुनो, मतलब हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं कि 31,000 जो है ना, उसके अंदर वेरिएबल पोर्शन भी है एंड 31,000 के अंदर फिक्स्ड पोर्शन भी है. मुझे नहीं पता कि वेरिएबल कितना है, फिक्स्ड कितना है. दैट्स व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट. सो आई डोंट नो कि इसके अंदर वेरिएबल पोर्शन कितना है, फिक्स्ड पोर्शन कितना है, तीनों वीक में. नाउ लिसन केयरफुली, आई कैन कंपेयर ओनली एनी 2 weeks एट अ टाइम. सो यू कैन कंपेयर 1 and 2, और यू कैन कंपेयर वीक नंबर 2 and 3, और यू कैन कंपेयर वीक नंबर 1 and 3. सो एनी 2 weeks हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. आई एम कंपेयरिंग वीक नंबर 1 and 2. आफ्टरवर्ड्स इफ यू वांट आई विल कंपेयर 2 and 3 ऑल्सो. तो पहले आप 1 and 2 को कंपेयर करोगे. प्लीज कंप्लीट माई स्टेटमेंट. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट. तो ये फटाफट इजीली सॉल्व होगा, रजिस्टर होगा. आई डोंट नो कि वीक नंबर 1 ये जो 31,000 है उसमें वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है. मुझे ये भी नहीं मालूम है कि वीक नंबर 2 में जो 33,000 है उसमें फिक्स कितना और वेरिएबल कितना है. बट कैन यू टेल मी, इफ आई कंपेयर वीक नंबर 1 एंड वीक नंबर 2, which portion in both the weeks is equal? Both the weeks में which amount is equal? Fixed का amount is equal. If 31,000 के अंदर fixed portion is 10,000, example just मैं assume कर रहा हूं, तो 33,000 के अंदर भी वो 10,000 ही होगा. Yes or no? Because it is fixed. In fixed cost, what remains constant? Fixed cost में what remains constant? Total amount, total cost remains constant. Factory overheads. Example of factory overheads say for example factory rent. तो हर वीक का फैक्ट्री रेंट तो सेम ही रहेगा. अब यहां पे अगर 5,000 है तो यहां पे भी 5,000 होगा और यहां पे भी 5,000 होगा. Moral of the story, you have to understand this point for I go to the next point.
कि फिक्स्ड पोर्शन इज इक्वल, अगर 2000 है तो तीनों वीक में 2000 है, अगर 5000 है तो तीनों वीक में फिक्स्ड इज 5000, अगर 10,000 है तो तीनों वीक में 10,000 है, एंड सो ऑन. डू यू एग्री विद दिस? हाउ टू कैलकुलेट वेरिएबल पोर्शन? वेरिएबल पोर्शन कैसे कैलकुलेट करूं? हाउ विल यू कैलकुलेट वेरिएबल पोर्शन? हाउ मच वाज यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन वीक नंबर 1? 1200. So can we say variable portion is calculated by multiplying 1200 into कुछ तो कॉस्ट पर यूनिट रहेगा, 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, 5 रुपी, कुछ तो रहेगा. सो 1200 इंटू पर यूनिट. वैसे ही वीक नंबर 2 में हाउ मच इज यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड? सो कैन वी से इट इज 1600 इंटू समथिंग पर यूनिट, एंड वीक नंबर 3 में इट इज इंटू समथिंग पर यूनिट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड बिलीव ये तीनों वीक में एज फार एज वेरिएबल पोर्शन इज कंसर्न पर यूनिट सेम रहेगा. Because in variable what is constant? Per unit is constant. If it is in week number 1 2 rupees per unit, तो week number 2 में भी 2 rupees है, week number 3 में भी 2 rupees per unit है. तो ये था पॉइंट नंबर 3 ऑफ द डिस्कशन. पॉइंट नंबर 1 था एवरी वीक में फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर यू हैव वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स पोर्शन. वेरिएबल फिक्स बिकॉज इट इज पार्टली वेरिएबल पार्टली फिक्स. देयर इज अ वेरिएबल पोर्शन, देयर इज अ फिक्स पोर्शन. सेकेंड कंक्लूजन हम लोग ने ये किया कि तीनों वीक में मुझे अमाउंट नहीं मालूम है कितना है, बट मुझे इतना पता है कि फिक्स्ड पोर्शन का अमाउंट इज सेम इन ऑल द वीक्स. थर्ड कंक्लूजन दैट आई मेड इज वेरिएबल में पर यूनिट तीनों वीक में सेम रहेगा. नाउ आई विल कंपेयर एनी 2 वीक्स. So now fourth conclusion is very important. Listen carefully. Can you check and tell me के week number 1 से week number 2 में how much is the difference? 2000. Do you agree if I say कि ये जो 2000 का डिफरेंस है ना is not because of fixed portion. ये जो 2000 का डिफरेंस है ना इज नॉट बिकॉज ऑफ फिक्स. क्यों? अरे बिकॉज फिक्स तो सेम है दोनों में, तो जो भी डिफरेंस है इज बिकॉज ऑफ विच पोर्शन? वेरिएबल पोर्शन. एंड वेरिएबल पोर्शन क्यों चेंज हुआ है? बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हुआ है. यस और नो? सो हाउ मच इज नंबर ऑफ यूनिट्स का चेंज? बरोबर है. सो कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी कि पर यूनिट कितना होगा? हाउ मच विल बी पर यूनिट? 5 रुपीज. हाउ डिड यू कैलकुलेट 5 रुपीज? 2000 इज डिवाइडेड बाय 400. तो ये जो 5 रुपया मिला इज माय विच कॉस्ट पर यूनिट? वेरिएबल. ये 5 रुपया मिल गया. तो अगर यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है. मल्टीप्लाई करो 1200 इंटू 5. तो वेरिएबल पोर्शन इज 6000. इफ वेरिएबल पोर्शन इज 6000 तो कैन यू टेल मी वीक नंबर 1 में हाउ मच विल बी फिक्स्ड पोर्शन? 25,000. हाउ डिड यू गेट 25,000? इस 31 में से 6000 वेरिएबल है तो बाकी का 25 इज fixed portion. Likewise calculate the variable portion in week number 2. 1600 into 5. So how will you calculate fixed portion? 33 minus 8 कितना होता है? So hence proved दोनों वीक में फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम. अच्छा, दिस कैलकुलेशन में आई कंपेयर्ड वीक नंबर 1 एंड वीक नंबर 2. आप वीक नंबर 2 एंड 3 भी कंपेयर कर सकते हो. कैलकुलेट करो हाउ मच इज द डिफरेंस? 1000. This difference is not because of which portion? Fixed portion. This difference is because of which portion? And variable portion क्यों change हुआ है? Because number of units change हुआ है. कितने से number of units change हुआ है? So you can still divide 1000 divided by 200. You will get the same answer, 5 rupees. अब multiply करो 1800 into 5. 1800 into 5 minus 34,000 into 9. Sorry, 34,000 minus 9,000. Again you can see fixed portion तीनों वीक में it is same. और ये पूरे कैलकुलेशन से I will derive one formula.
कैन यू टेल मी ये 5 रुपीज हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया? हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस 5 रुपीज? फर्स्ट टाइम यू डिवाइडेड व्हाट डिवाइड बाय व्हाट? 2000 डिवाइडेड बाय 400. व्हाट इज दिस 2000? ये 2000 को डिफाइन करो. व्हाट इज दिस 2000? हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस 2000? इट इज 33,000 माइनस 31,000. तो 2000 कैसे कैलकुलेट किया? तो 2000 क्या है? डिफरेंस. और आई कॉल इट एज चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स divided by what is this 400? Change in output, change in units, or you can say change in units manufactured. तो वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज हाउ यू विल ब्रेक सेमी वेरिएबल कॉस्ट. मुझे ब्रेक करना है सेमी वेरिएबल को इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड. तो ब्रेक करने के लिए वेरिएबल पर यूनिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट? चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स और चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स. This formula will be utilized entire subject में. So do one thing, leave one line. एक लाइन छोड़ के लिखो. Comparing week 1, comparing week 1, comparing week 1 and week 2. Comparing week 1 and week 2. Underline that. Next line. Change in factory overheads. Change in factory overheads. Equal to 33,000 minus 31,000 same line equal to rupees 2000. Next line write down change in output, sorry, change in units manufactured. Change in units manufactured. Same line equal to 1600 minus 1200. Next line write down such change. अच्छा इसके पहले क्या लिखा? चेंज इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू 1600 माइनस 1200 इक्वल टू 400 यूनिट्स. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन सच चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स. सच चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स is because of change in variable portion of factory overheads comma after a comma compulsory next line since fixed portion is not going to change. Since fixed portion is not going to change with the change in units manufactured. Next line write down therefore variable portion of factory overheads
Therefore, variable portion of factory overheads per unit. Next line equal to, put equal to sign. Okay, can you make formula? It is what divided by what? Change in factory overheads divided by change in units manufactured. Change in factory overheads divided by change in units manufactured. Next line equal to rupees 2000 divided by 400 units. Same line equal to rupees 5 per unit. ओके, नॉट रिक्वायर्ड बट जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लाइन छोड़ के लिखो, कंपेयरिंग वीक 2 एंड वीक 3. नेक्स्ट पेज. कंपेयरिंग वीक 2 एंड वीक 3. सी वी आर डूइंग दिस जस्ट फॉर अवर वेरिफिकेशन. एग्जाम में आया तो एक ही बार कंपैरिजन करने का, 2 या 3 या 1 एंड 2. 1 एंड 3 भी आप कंपेयर करो, आपको आंसर सेम आएगा. कंपेयरिंग टू वीक 2 एंड वीक 3. नेक्स्ट टाइम चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू change in factory overheads equal to 34,000 minus 33,000. Same line equal to rupees 1,000. Next line change in units manufactured equal to $1,800 minus 1,600. Equal to 200 units. Next time, therefore, variable portion of factory overheads per unit, variable portion of factory overheads per unit equal to डायरेक्टली डिवाइड करो ₹1,000 divided by 200 units equal to ₹5 per unit. ₹1,000 divided by 200 units is equal to ₹5 per unit. Okay, now एग्जाम में कैसे लिखने का, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने पॉइंट नंबर 3 हेडिंग दिया ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स. गो टू प्रीवियस पेज. आपने जो भी हेडिंग दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने जो भी लिखा है ना वो कुछ नहीं लिखने का, डायरेक्टली कंपेयरिंग वीक नंबर 2 एंड 3 जो नेक्स्ट पेज पे तुम लिख रहे हो ना, और डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के पर यूनिट कैलकुलेट करने का. तो उसके पहले जो भी लिखा है वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. एग्जाम में यू कैन नॉट राइट ऑल दिस, इज नॉट नीडेड. 7 मार्क का सम रहेगा, उसमें तुम ये सब लिखोगे, उसको कुछ मतलब नहीं है. हम लोग ने वो सब क्यों लिखा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो आई रिपीट, हेडिंग देने का पॉइंट नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन व्हाट विल यू राइट, कंपेयरिंग वीक नंबर 2 एंड 3 और वीक नंबर 1 एंड 2.
चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड. इनफैक्ट वो भी नहीं लिखने का, डायरेक्टली तुम लिख सकते हो वेरिएबल पोर्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखने का, कैलकुलेशन करके एक आंसर. ओके, नाउ आई हैव कैलकुलेटेड द वेरिएबल पोर्शन एज 5 रुपीज पर यूनिट. आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू कैलकुलेट द फिक्स्ड पोर्शन. तो फिक्स्ड पोर्शन कैलकुलेट कैसे करने का? सो राइट डाउन फिक्स्ड पोर्शन of factory overheads fixed portion of factory overheads, same line equal to लिखो total minus variable. See in week number 1, what is the total overheads? वीक नंबर 1 का टोटल ओवरहेड्स कितना है? 31,000. Variable is at the rate of rupees 5 per unit. And week number 1 में number of units is 1200. So 1200 into 5. Variable का amount is 6,000. So fixed का amount will be total minus variable. 31 minus 6,000, fixed का amount will be 25,000. Likewise, we can do it for week 2. And likewise we can check for week number 3. तीनों वीक में फिक्स्ड का अमाउंट सेम आएगा, which is 25,000. So whether it is week 1 or whether it is week number 2 or whether it is week number 3. लेकिन अभी तक जो हम लोग ने किया है, we have only bifurcated factory overheads into variable and fixed. We have to find out factory overheads for how many units? Yes. Now we know that factory overheads is having variable portion and fixed portion. Whether the factory was manufacturing 1200 units in week 1 or 1600 units in week 2 or 1800 units in week 3, can you tell me variable में in all 3 weeks what was constant? Per unit 5 rupees. तो जब 2000 बनाओगे तभी भी वेरिएबल में व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? पर यूनिट, दैट इज 5 रुपीज.
and tell me in fixed what will remain constant. In week number 1, 2, 3, 25,000 was constant. So when you manufacture 2,000, that time also how much will remain in fixed cost? 25,000. So when the factory is manufacturing 2,000 units, factory overheads is 35,000. This was point number 3. Now take point number 4. अब we will write the final solution. क्योंकि finally we are supposed to find out selling price for 2000. वो तो अभी तक हमने ढूंढा ही नहीं है, तो वो तो अब हम ढूंढेंगे. Write down statement showing calculation of selling price per unit when weekly output is 2000 units. So prepare this small table for 6 to maximum 7 lines. This 7 lines is excluding ये दोनों लाइन heading का particulars वाला. If you check the question अभी तक जो हम लोग ने सॉल्व किया है, in that you have 3 things. Direct material भी available है 2000 units का, direct labor is also available, and factory overheads is also available. So write down direct materials. Okay, can you check? Go to point number 1. Direct material for 2000 units. How much is the direct material for 2000 units जो तुमने calculate किया हुआ है? 15,000. And per unit कितना है? Even per unit you have 7.5. So total we can write in total column, that is 15,000, and per unit we can write in per unit column, which is 7.5. Similarly, next one is direct wages. Direct wages का amount you can check, even you have calculated that in point number 2. 6,000 total में आएगा and 3 rupees. So I am totaling this. Direct material plus direct wages is called as prime cost. हम लोग ने तो फिर भी बहुत बड़ा बड़ा कॉस्ट शीट बनाया है, ये तो बहुत काफी छोटा है क्योंकि इसके अंदर 3 ही कॉस्ट है, मटेरियल, वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. Prime cost, next line. Prime cost में what we should add? Factory overheads. How much is the factory overheads that we have calculated for 2000?
35,000, ये 35,000 को पर यूनिट में कैसे डिवाइड करेंगे? 35,000 को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 35,000 शुड बी डिवाइडेड बाय, ये सब हम कितना यूनिट्स के लिए कर रहे हैं? 2000, तो 35,000 को 2000 से डिवाइड करो। टोटल कॉस्ट में आप क्या करोगे तो आपको सेल्स मिलेगा? एड प्रॉफिट। ओके, चेक करो, इज प्रॉफिट परसेंटेज गिवन? ओके, आई हैव डिस्प्लेड। बोलो क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? 20% ऑन व्हाट? 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो है नहीं हमारे पास, वही तो हम ढूंढ रहे हैं। तो लेट सेलिंग प्राइस बी 100, सो प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। 20% ऑन सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट विल बी 20, सो प्रॉफिट विल बी, सॉरी, कॉस्ट विल बी 80। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और यू कैन राइट लाइक दिस, मैथमेटिक्स बोलता है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, दैट इज 25% ऑन कॉस्ट। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो बाय डिवाइडिंग 20 अपॉन 80 into 100. 20 upon 80 into 100 is 25%. So 20% on selling price is 25% on cost. How much is profit amount? 14,000. पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 14,000 शुड बी डिवाइडेड बाय 2,000. डिवाइड करो 2000 से, यू गेट 70,000, and finally we get selling price as 35. At present it is 88. If you get the same book, then it will be 88. Okay, take question number 7. This was important question. I hope everybody understood this. How to break selling semi variable. इफ एट ऑल आपको ये कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, फोटो लेना है तो फोटो ले सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा मत लिख के आना प्लीज। In case if you want, I'll zoom.
Yes. Okay, take question number 7. It's a very simple question. Don't go by the size. Looking at this table, बहुत जन डर जाते हैं. Actually, this is very easy. A company has capacity to produce 1 lakh units of a product every month. So company can produce 1 lakh units every month. Its works cost, we have studied cost sheet में हम लोगों ने पढ़ा है what is works cost. तो works cost at varying levels of production is as under. So try to understand this table. If the company is working at 10% level of capacity, works cost will be 400 per unit. 20% level of capacity, it will be 390 rupees per unit. Likewise, they have given up to 100%. Its fixed administration expenses amounted to rupees 1,50,000. Fixed marketing expenses amounted to rupees 2,50,000 per month respectively. The variable distribution cost amounts to 30 per unit. It can sell 100% of its output at rupees 500 per unit, provided it incurs following further expenditure. It gives gift items costing 30 rupees per unit of sale. It has lucky draws every month, giving the first prize of 50,000, second prize of rupees 25,000, third prize of rupees 10,000, and 3 consolation prizes of rupees 5,000 each to customers buying the product. It spends rupees 1 lakh on refreshment served on every month to its customer and sponsors a television program every week at a cost of 20 lakhs per month. ये चारों कॉस्ट कंपनी को करना पड़ेगा if company wants to sell 100% of its output. 100% of its output मतलब how many units per month? 1 lakh. ये 100% मतलब 1 lakh. So 100%. ये आपको लेवल जो है ना, लेवल ऑफ कैपेसिटी परसेंटेज में दिया है. सपोज मैं यूनिट्स में बात करूं तो, so when I say 100%, that means how many units? 1 lakh. If I say 10% of the capacity, तो 10,000 units. 20% मतलब 20,000 units. 30% मतलब 30,000 units, and likewise. अब आगे बढ़ते हैं. अगर कंपनी को 100% ऑफ इट्स आउटपुट बेचना है, मतलब 1 लाख यूनिट्स बेचना है at rupees 500 per unit, तो it will not be easy for the company. उसमें से कंपनी will have to do any 4 के all 4? All 4 करना पड़ेगा. It will have to incur the following expenditure. तो गिफ्ट आइटम्स भी देना पड़ेगा, लकी ड्रॉ भी करना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट्स भी देना पड़ेगा, एंड टेलीविजन प्रोग्राम भी स्पॉन्सर करना पड़ेगा. दिस 4 things company will have to do. However, it can market 30% of its output at 550 per unit without incurring any of the expenses referred to in A to D above. There is a correction. A to D above. What is the meaning of this statement? Can somebody explain? कि अगर कंपनी को 30% ऑफ इट्स आउटपुट मार्केट करना है, 30% ऑफ इट्स आउटपुट मींस हाउ मेनी यूनिट्स?
30,000। सो अगर कंपनी सोचता है कि नहीं भाई हमको सिर्फ 30,000 यूनिट ही बेचना है, वी वांट टू सेल ओनली 30,000 यूनिट्स, देन कंपनी विल नॉट हैव टू इनकर, वो सब नहीं करना पड़ेगा। सो आपको बोला है प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द मंथ शोइंग टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। दो कैपेसिटी लेवल पे पूछा है, कैपेसिटी लेवल 30% एंड कैपेसिटी लेवल 100%। कैन यू टेल मी, परसेंटेज में बोला है, कैन यू टेल मी यूनिट्स में 30% मीन्स हाउ मेनी यूनिट्स एंड 100% मीन्स हाउ मेनी यूनिट्स? 1 लाख। चलो प्रिपेयर फॉर्मेट, पहले आप फॉर्मेट बनाओ, आई विल एक्सप्लेन द फॉर्मेट लेटर, यू प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट। Prepare this format. थोड़ा चेंज है फॉर्मेट में, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दैट। These are the headings. Here we can see cost sheet is for the month because clearly last line में लिखा है prepare cost sheet for the month. Of course we don't know कि कौन सा month ended है. Okay, now do you recollect cost sheet का format? बोलो cost sheet format starts with what? हाँ तो can we start with direct material? Have they given you information regarding direct material? No. Can you tell me cost sheet will directly start with what? डायरेक्ट मटेरियल तो है नहीं, डायरेक्ट वेजेस भी नहीं है, तो कॉस्ट शीट बनेगा कैसे? कहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट करने का आप लोग ही सोच के बताओ, क्योंकि आपको स्टार्ट मिल गया उसके बाद तो बहुत सिंपल है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, पेज नंबर 64 से पता चल जाएगा किधर से स्टार्ट करने का। फैक्ट्री
इन्वेंट्री और विच कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, तो ऑलरेडी वो लोग ने वर्क्स कॉस्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये पूरे टेबल में से विच वर्क्स कॉस्ट इज फॉर अस रेलेवेंट, ये सब काम का है क्या? 10%, 20%, 30%, 40%। वी आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट एट विच 2%, 30% एंड, तो बाकी सब कुछ काम का नहीं है। 30%, तो एट 30% दिस इज वर्क्स कॉस्ट व्हाट, ये 380 जो है दैट इज वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट, एंड 310 इज ऑल्सो वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट। तो डायरेक्टली हमारा कॉस्ट शीट वर्क्स कॉस्ट से ही चालू होगा। सो राइट डाउन फर्स्ट लाइन, वर्क्स कॉस्ट। बोलो यहाँ पे 30,000 यूनिट्स में पर यूनिट कितना लिखोगे? हाउ मच इज पर यूनिट? 380, इफ पॉसिबल राइट ऑन 380.00, एंड यहाँ पे 310.00। अच्छा, अभी टोटल कैसे ढूंढोगे? 30,000 पे टोटल यू विल मल्टीप्लाई हाउ मच इंटू हाउ मच? 380 को कितने से मल्टीप्लाई करने का? 30,000 से मल्टीप्लाई। ओके, and at 1 lakh units it is 1 lakh into 310, 3 crore 10 lakh. ओके, लेट अस प्रोसीड। चलो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को आगे बढ़ाओ। वर्क्स कॉस्ट के बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं? डू यू हैव क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट? नो। डू यू हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट? नो। डू यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन? ये यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, दिस इज विच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस? जनरल, तो वो भी नहीं है। डू यू हैव सेल ऑफ स्क्रैप? डू यू हैव प्राइमरी पैकिंग? नो। तो यही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। दिस इज सेल्फ इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? नो। डू यू हैव क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स? नो। तो यही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। तो डायरेक्टली वी हैव रीच्ड अप टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चाहिए तो पेंसिल से लिख दो स्लैश करके, यही मेरा सीओपी है, यही मेरा सीओजीएस है, तो यही हमारा सब कुछ है। ओके, नाउ आफ्टर लिटरेस वी हैव लिटरली रीच्ड अप टू सीओजीएस। बोलो सीओजीएस के बाद कौन से दो ओवरहेड्स को हम लोग ऐड करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। वी हैव फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। डू यू एग्री विद दिस? सो नेक्स्ट टाइम राइट डाउन ऐड fixed administrative expenses. Can you tell me how much is fixed administrative expenses? तो 1,50,000 per month. Can you tell me 1,50,000 will come at which percentage? 30% के 100%? Both, because it is which, what in behavior? Fixed. So whether you work at 30% or whether you work at 100%, total cost will remain same 1,50,000. तो ये 1,50,000 दोनों में सेम रहेगा। पर यूनिट कैलकुलेट करो। बोलो हाउ विल यू कैलकुलेट पर यूनिट? 30,000, 1,50,000 divided by 30,000 is how much? 5. Here it is 1.5. Okay, chalo. After this fixed administrative cost, which is the next cost that we normally write in cost sheet? Administrative overheads general के बाद which is the next one that we write? So do you have selling and distribution? Yes, fixed marketing cost. How much is fixed marketing cost? 2,50,000. So write down next line, fixed marketing expenses. No, not needed. Fixed marketing expenses.
fixed marketing expenses. Tell me what is the amount? Again, fixed marketing expenses 2,50,000 will come in which column? Both, because it is fixed. वो तो हमको करना ही पड़ेगा. Divide करो 2,50,000 divided by 30,000. How much you getting? 8.33. And here it is 2.5. Okay, which is the next cost that is given? Variable distribution cost. So next line, add variable distribution cost. Variable distribution cost. Can you tell me variable distribution cost is given how much? Where this 30 will come? Per unit column में दोनों में per unit will remain constant because it is variable. Okay. Multiply करो. Here it is 9 lakh. Here it is 30 lakhs. Now listen carefully, give me the answer. Is there any other cost? ध्यान से सोच के बोलो. Is there any other cost? Is there any other cost? अरे वो चारों कॉस्ट है ना, A B C D. What is A? Gift items. What is B? Lucky draw. What is C? Refreshment. What is D? ये सब कॉस्ट कब करना पड़ेगा? When company wants to sell 30,000, when the company wants to tell 1 lakh के दोनों only 1 lakh. 30,000 बेचोगे तो ये सब करने का जरूरत नहीं है. ज़्यादा यूनिट्स बेचने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना, लकी ड्रॉ करो, नहीं ये बनाओ, नहीं वो बनाओ. बाकी 30,000 बेचने के लिए सब करने का जरूरत नहीं है. सो वी कैन से if you read all these examples, these are also selling and distribution only. So next line, write down add special cost. Next line, write down add special cost. Add special cost, underline that. So next line, gift items. Achha, first of all you tell me this cost will not come under which category or which level of activity? 30%. Everything will come only in 1 lakh, that is 100%. Gift items is per unit के total. Per unit is कितना? 30. अभी अभी मल्टीप्लाई किया था 30. So this will also be 30 lakhs. So 30 lakhs का गिफ्ट आइटम्स देना पड़ेगा. तो कभी कभी होता है कि ये बाय करो तो उसके ऊपर एक 30 रुपीज़ का एक आइटम फ्री दे देंगे हम लोग. ओके, नेक्स्ट गिफ्ट आइटम्स के बाद नेक्स्ट क्या है? लकी ड्रॉ. सो नेक्स्ट टाइम राइट डाउन प्राइजेस टू कस्टमर्स. प्राइजेस टू कस्टमर्स. कैन यू टेल मी हाउ मच टोटल प्राइजेस हमको देना पड़ेगा? प्लीज सोच समझ के कैलकुलेट करना. हाउ मेनी प्राइजेस इट विल हैव टू गिव. फर्स्ट प्राइस कितने का देना पड़ेगा? प्लस सेकंड प्राइस कितने का देना पड़ेगा? 25. एंड थर्ड प्राइस 10,000 का देना पड़ेगा. एंड प्लस 3 कॉन्सोलेशन प्राइजेस ऑफ 5,000 ईच. तो 3 मतलब कितना? 15,000. तो ये सबको ऐड करो, कितना होता है टोटल? 1 लाख का तो प्राइजेस देना पड़ेगा कस्टमर्स को. 1 लाख. 1 लाख को हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. चलो नेक्स्ट, रिफ्रेशमेंट्स. इधर ब्रैकेट में लिखो नोट 1. वी विल प्रिपेयर 1 नोट. रिफ्रेशमेंट्स
कितने का रिफ्रेशमेंट्स देना पड़ेगा कस्टमर्स को? 1 लाख, दैट इज 1 रुपी. And last one is sponsorship cost. Sponsorship cost 20 लाख रुपीस पर मंथ. कोई तो टेलीविजन प्रोग्राम स्पॉन्सर करना पड़ेगा, दैट इज पर यूनिट 20. चलो ये हो गया. आई वांट टोटल ऑफ ऑल कॉलम्स. यहाँ पे सब में डैश डाल दो चाहिए तो. व्हाट इज द टोटल? वन crore. ओके, पर यूनिट कितना है? 420. 100 पे टोटल करो. 3 crores 96 lakh. 396. कॉस्ट ऑफ सेल्स के नेक्स्ट लाइन में लिखवायर्ड प्रॉफिट. सो नेक्स्ट लाइन में आएगा सेल्स. ओके, चेक कैन टेल मी, अगर कंपनी 30,000 यूनिट्स बेचता है तो हाउ मच विल बी सेलिंग प्राइस? 550. बट अगर कंपनी इज सेलिंग 1 लाख यूनिट्स तो हाउ मच इज सेलिंग प्राइस? 500. ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली बोला है that if company wants to sell 100%, selling price 500 होना चाहिए. If company is selling 30%, selling price 550 होना चाहिए. I want to calculate sales. So one unit will be sold at 550. So 30,000 कितने में होगा? So 30,000 into 550, 1 crore 65 lakhs. And 1 lakh into 500 करो. 5 crores. Calculate profit. This is profit if 38 lakhs. And what is the per unit? 126.67.
Okay, so that brings us to the last question of this chapter. This is examination question. इसमें हम लोग एक point जो है which is again not only important from this chapter point of view but also from subject point of view, we will study one important point. In fact, that is one important concept. See, to explain my point, I need to take one small example. After taking this example, I can proceed with that last question. So, listen very carefully. Suppose they give you information about 2023. If they give you, this is very important जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, because this also for all chapters what I are discussing will remain same. और लास्ट में हम लोग वो important points जो हमको लिखना है वो हम लोग लिखेंगे. Right now I am talking about 2023. Suppose 2023, in 2023 कंपनी ने से फॉर एग्जाम्पल 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल किया था. 50,000 units were produced and sold. I will write it here if you want, that these 50,000 units were produced and sold in 2023. Right now you focus only on 2023. Then suppose in 2023 I prepare cost sheet of the company, say for example direct materials. So say direct materials was for example 9 rupees per unit. In 2023 direct material was 9 rupees per unit. तो can you calculate कि direct material 2023 में total कितना होगा? 4,50,000. This is total direct material cost in 2023. Okay, आगे का cost I will discuss later. Now suppose for example I want to estimate. What is the word that I've used is estimate for next year, that is 2024. I am doing estimation for the next year कि next year में मैं estimate कर रहा हूं कि कंपनी का production will increase, say for example by 20%. So company ka production will increase by 20%. So can you tell me how many units will be produced and sold in 2024? 60,000. So this 60,000 units is produced and sold. Okay, 60,000 units is to be produced and sold. To be produced and sold. Next year mein company is planning that we will sell 60,000 units to be produced and sold. Now suppose for example they tell you that in the next year in the next year direct material will increase. Direct material will increase by 10% in 2024. Next year मतलब 2024. 2024 में direct material will increase by 10%. So I want only one answer from you. 2024 में how much will be my direct material cost?
Now the question is, how do I interpret this statement? Question का answer depends upon interpretation of this statement. What is this statement? Direct material will increase by 10%. Now this statement is not clearly speaking कि next year में direct material में what will increase by 10%. डायरेक्ट मटेरियल का मेरे पास यहां पे दो अमाउंट है. वन इज टोटल कॉस्ट दैट इज 4,50,000 एंड सेकेंड वन इज पर यूनिट दैट इज 9 रुपीज. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट क्लियरली स्पीकिंग आउट कि व्हाट विल इंक्रीज बाय 10%. अगर मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल इंक्रीज बाय 10%? 4,50,000 विल इंक्रीज बाय 10%. अगर मैं ये स्टेटमेंट को बोलता हूं डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल इंक्रीज बाय 10%? 9 रुपीज. तो क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई अज्यूम, व्हाट शुड आई कंसीडर, व्हाट इज करेक्ट? ये स्टेटमेंट को मैं कैसे इंटरप्रेट करूं? बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट क्लियर. तो उसके लिए वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क. थोड़ी देर के लिए यू इग्नोर दिस लाइन, इन द नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10%. सपोज ये लाइन नहीं दिया है, तो कैन यू टेल मी कि नेक्स्ट ईयर में डायरेक्ट मटेरियल में इफ नथिंग वॉज गिवन देन व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? आई रिपीट माय क्वेश्चन. अगर सपोज ये पॉइंट नंबर 1 नहीं दिया होता, तो नेक्स्ट ईयर में डायरेक्ट मटेरियल में व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट. व्हाई डायरेक्ट मटेरियल में पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट? यस, बिकॉज you are looking into the behavior of the cost. And remember, if nothing is given, direct material is always what in behavior? Variable, perfectly variable. डायरेक्ट मटेरियल में अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? Perfectly variable. So if nothing was given, I would have taken this 9 rupees as कांस्टेंट. क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि वेदर आई मैन्युफैक्चर 50,000 और वेदर आई मैन्युफैक्चर 60,000 डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट विल रिमेन 4,50,000. यू कैन नॉट अस्यूम दैट डायरेक्ट मटेरियल इज फिक्स्ड इन बिहेवियर. इट इज नॉट पॉसिबल. मेरा यूनिट्स बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा. डायरेक्ट मटेरियल इज परफेक्टली वेरिएबल. तो अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो डायरेक्ट मटेरियल में आई वुड हैव टेकन पर यूनिट एज कांस्टेंट. बट ये तो अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो, बट यहां पे तो दिया है कि डायरेक्ट मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10%. तो कैन यू टेल मी इफ दे हैव गिवन दिस इंफॉर्मेशन विल बी अप्लाइड टू what of direct material per, sorry, this information will be applied to what of direct material? Will it be applied to total cost of direct material or will it be applied to per unit of direct material? Per unit of direct material and not total cost. मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि मटेरियल विल इंक्रीज बाय 10%, so because material is considered as variable or perfectly variable in behavior, whatever information question में दिया है is regarding per unit of direct material, and therefore next year में direct material will become how much rupees? 9.9. Now my question is, अभी हम लोग ने जब लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने बोला डायरेक्ट मटेरियल में पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट. वेयर इज इट रिमेनिंग कांस्टेंट? पर यूनिट तो चेंज हो रहा है. वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट. वेयर इज इट रिमेनिंग कांस्टेंट? I told you that per unit will remain constant irrespective of changes in the number of units. ये जो 10% से इंक्रीज हो रहा है ना, is not because of number of units increasing, it is increasing because of external factor. इन्फ्लेशन की वजह से वो 10 पर यूनिट 10% से इंक्रीज हो रहा है. अरे सप्लायर मेरे को लाइफ टाइम थोड़ी 9 रुपए में देगा.
एवरी ईयर डायरेक्ट मटेरियल कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना, 5%, 2%, 3%. आई एम नॉट सेइंग, कभी कभी कम भी हो सकता है, बिकॉज मटेरियल का मार्केट में डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होते रहता है. सो एवरी टाइम इट विल नॉट गिव मी फॉर 9 रुपीज पर यूनिट. बट ये पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है कि एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एनी कॉस्ट and that information is not clear, and believe me, information will never be clear, तो आप पहले वो कॉस्ट का बिहेवियर चेक करोगे. सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, all 3 prime cost items, which are the 3 prime cost items? Direct material, direct wages and direct expenses. ये तीनों को हम हमेशा क्या assume करेंगे? They are all perfectly variable. एंड इफ दे आर परफेक्टली वेरिएबल, ये तीनों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा विल बी इंफॉर्मेशन अबाउट पर यूनिट. एग्जाम्पल, सपोज इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बोलता हूं डायरेक्ट वेजेस. सपोज डायरेक्ट वेजेस इज 6 रुपीज पर यूनिट, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 50,000 इंटू 6 यू विल गेट 3 लाख. अब ये लोग आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे मालूम है? Wages will increase by 5%. Wages will go up by 5%. So wages में what will go up by 5%? ये क्लियरली नहीं बोला है. तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो मैं किसको अप्लाई करूं? टोटल डायरेक्ट वेजेस को अप्लाई करूं कि पर यूनिट को अप्लाई करूं? See, अगर क्वेश्चन इज क्लियर ना, वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 5%, देन यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड, देन यू डोंट हैव टू सिट एंड थिंक के बारे में किसके बारे में बोल रहा है. लेकिन हमको हमारा दिमाग कब लगाना है? व्हेन वी हैव टू अप्लाई आवर ब्रेन्स, व्हेन दे आर नॉट गिविंग अस क्लियरली, एंड दे विल नेवर गिव यू क्लियरली. बिलीव मी, दे विल नेवर गिव यू क्लियरली. वो लोग ऐसे ही बोलेंगे वेजेस विल गो अप बाय 5%. तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो वेजेस का किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? टोटल के बारे में है कि पर यूनिट के बारे में? पर यूनिट. बिकॉज वी बिलीव दैट डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो perfectly variable in absence of information. So in absence of information, which 3 costs are always perfectly variable? Direct material, direct wages and direct expenses. All 3 prime cost items are perfectly variable. So I conclude this point. Point is very simple. किसी भी cost के बारे में अगर आपको information देते हैं तो how do I know whether that information is information about total cost or whether that information is about per unit? अगर कोई information is clear तो obviously I will follow it, but problem कब आता है? when information is not clear. तो हमेशा we will look into the behavior of the cost, and after looking into the behavior of the cost we conclude कि ये तो variable cost है, तो whatever information उस कॉस्ट के बारे में दिया है इज इंफॉर्मेशन अबाउट पर यूनिट ऑफ दैट कॉस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट इज वेरी सिंपल. डायरेक्ट मटेरियल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और अगर नहीं बोला रहेगा कि वो टोटल डायरेक्ट मटेरियल के बारे में है कि पर यूनिट के बारे में, तो ऑब्वियसली मटेरियल बीइंग परफेक्टली वेरिएबल, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन वो पर यूनिट के बारे में. इसको हम अप्लाई भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं थियोरिटिकली बात कर रहा हूं, इसको हम अप्लाई भी करेंगे और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखेंगे. सो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आप पहला ही लाइन पढ़ो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा. फर्स्ट लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 types of pens, super pen and normal pen. So what is new point of this question? What we have not done in any of the previous question, कि there are how many products? 2 products. One is super pen and one is normal pen. Next, cost data for the year ended 30th September 2019 is as follows. तो आपको direct materials दिया है 8 lakh, direct wages दिया है 4,48,000 and production overheads दिया है 1,92,000. It is further ascertained that direct material cost in super pen was twice as much of direct material in normal pen. Direct wages for normal pen are 60% of those for super pen. Production overhead per unit was at the same rate for both the types.
Administration overhead was 200% of direct labor for each. Selling cost was rupee 1 per super pen. Production and sales during the year were as follows. तो सुपर पेन का प्रोडक्शन was 40,000 but सुपर पेन का सेल्स was 36,000. नॉर्मल पेन का प्रोडक्शन इज 1,20,000 बट नॉर्मल पेन का आपको सेल नहीं दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस फॉर सुपर पेन इज 30 रुपीज पर यूनिट. You are prepared or you are rather required to prepare cost sheet only for which pen? सुपर पेन. आपको नॉर्मल पेन के बारे में पूछा भी नहीं है, आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला है ओनली कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन. माय फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? विच इज द फर्स्ट हेडिंग दैट वी गिव? particulars. How many rupees column that we make? 2 rupees column, inner rupees, outer rupees. In fact ये question में because it is a small question, गिने चुने cost है इसके अंदर. अगर आप inner column नहीं बनाओगे rupees का तो चलेगा because there is no inner column that is required. So rupees का अगर आपने एक ही column बनाया तो भी चलेगा. Will you prepare additional columns? If you remember, we have discussed this point. एडिशनल कॉलम्स में कौन से एडिशनल कॉलम्स बनते हैं? पर यूनिट एंड फिनिश्ड क्वांटिटी. इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको 2 कंडीशंस बोला था. व्हेन डू यू प्रिपेयर दीज 2 कॉलम्स? नंबर 1, व्हेन यूनिट्स का इंफॉर्मेशन दिया है. इज यूनिट्स इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन? यस. सेकेंड, दूसरा मैंने कंडीशन आपको ये बोला था, व्हेन प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी एंड सेल्स क्वांटिटी आर डिफरेंट, तब हम ये 2 कॉलम बनाएंगे. इज प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी एंड सेल्स क्वांटिटी ऑफ सुपर पेन डिफरेंट? यस. तो दैट मीन्स हम लोग कितने कॉलम्स बनाएंगे? 2 एडिशनल कॉलम. ऑफ कोर्स पर्टिकुलर रुपीज, उसके बाद 2. गो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलो साइमल्टेनियसली लिखते जाते हैं बिकॉज वी वांट टू कंक्लूड दिस चैप्टर and these important points which are important not only for this chapter but for other chapters also. important points का जगह तुम लोग ने कहां पे छोड़ा है? किसके नीचे? below what? yes, इसके नीचे important points. write down important point में number 1. let us write simultaneously. important point number 1 में लिखो, when finished goods quantity related information is given. When finished goods quantity related information is given. Okay, now do one thing. इसके नीचे we are supposed to write 2 points, so A and B. So next line write down A. If units produced is equal to units sold. If units produced is equal to units sold. Can you think and tell me कि अगर units produced and sold equal है मतलब company is not having what? जितना प्रोड्यूस कर दिया उतना बेच दिया, मतलब क्या नहीं है? क्लोजिंग क्यों? स्टॉक ही नहीं है. सो राइट डाउन ब्रैकेट में नो स्टॉक, ब्रैकेट क्लोज. चलो रीड द हेडिंग. क्या लिखा है हम लोग ने? इफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड, ब्रैकेट में लिखो नो स्टॉक, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा. नेक्स्ट लाइन, 1 additional column
should be prepared in cost sheet. One additional column should be prepared in cost sheet. That is per unit column. ओके मतलब कोई समझाएगा सिंपल लैंग्वेज में कि अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इक्वल है तो कितना एडिशनल कॉलम बनाने का? ओनली वन. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉलम? विच वी डिड टुडे ओनली. यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन दैट वी सॉल्व, इसमें स्टॉक नहीं था, जितना प्रोड्यूस है उतना सोल्ड था, तो हमने सिर्फ वन एडिशनल कॉलम बनाया पर यूनिट कॉलम. हम लोग ने यहाँ पे फिनिश क्वांटिटी का कॉलम नहीं बनाया जो हम लोग बनाया करते थे. नाउ राइट डाउन पॉइंट नंबर बी. if units produced is not equal, if units produced is not equal to units sold, comma, two additional columns should be prepared in cost sheet. That is per unit एंड फिनिश्ड क्वांटिटी. तो वहां पे दो कॉलम बनाने का, पर यूनिट एंड फिनिश्ड क्वांटिटी. ऐसा तो हम लोग ने बहुत सारा सम किया है. इफ रिमेंबर, जिसमें हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया था, वी हैड प्रिपेयर्ड. सो कैन यू टेल मी इन दिस क्वेश्चन विच केस इज एप्लीकेबल? सेकंड केस इज एप्लीकेबल. चलो, सो लेट अस ड्रॉ द फॉर्मेट. वी विल कम टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मुझे और 2-3 पॉइंट लिखवाने हैं, मिनिमम 2. ओके, नाउ कम टू द फॉर्मेट. There is one small change. Of course, as I told you, which column? रुपीस कॉलम में कितना बनाना है हमको? सिर्फ एक ही रुपीस कॉलम. डोंट प्रिपेयर इनर रुपीस कॉलम, इट इज नॉट नीडेड. प्रिपेयर दिस फॉर्मेट. ओके, डोंट राइट. सी हियर, मुझे सिर्फ पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो. बाय रीडिंग द क्वेश्चन, कैन यू टेल मी that if I want to start with cost sheet, you observe here, क्योंकि ये लोग ने हमको सिर्फ एक ही पेन का cost sheet बनाने बोला है, which is that super pen. They have not asked us to prepare cost sheet for normal pen. Then also I have done this presentation just because I want to explain one point. चलो, now can you tell me, if I start with cost sheet, which is the first thing that will come in cost sheet? Direct materials. Come to the question and check how much is direct materials amount that is given. 8 lakhs. In fact, I want two information before we proceed with direct material. First, you tell me how many pens of normal pen were produced? 1,20,000. I will write quantity column में 1,20,000. And how many units or pens of super pen were produced? 40,000. तो ये मैंने क्वांटिटी कॉलम में लिखा है. इफ यू रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ विच क्वांटिटी? प्रोडक्शन क्वांटिटी या प्रोड्यूस क्वांटिटी. ओके, नाउ कहीं पे तो क्वेश्चन में आप चेक करके बताओ हाउ मच इज मटीरियल्स और डायरेक्ट मटीरियल्स दैट इज गिवन. डायरेक्ट मटीरियल्स गिवन इज रुपीज 8 लाख. आई वॉन्ट वन क्वेश्चन का आंसर. ये जो 8 लाख है, this is direct material for normal pen, is this direct material for super pen, or is this total? टोटल डायरेक्ट मटेरियल है. सुपर पेन और नॉर्मल पेन का मिला के कंबाइंड टोटल इज 8 lakhs. टिल हियर हैव यू अंडरस्टूड? अब मुझे 8 lakhs को ब्रेक करना है. ये ब्रेक करने के लिए हैव दे गिवन यू एनी इंफॉर्मेशन? विच इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन? हाँ, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन. तो यूज दैट इंफॉर्मेशन और मुझे 8 lakhs का ब्रेकअप बताओ.
यूज द इंफॉर्मेशन नंबर 1 एंड मुझे 8 lakhs का ब्रेकअप बताओ। नॉर्मल पेन का कितना है? 2,66,667. Okay, and for super pen 5,33,333. Okay, any other answer? यानी हाउ टू प्रोसीड, मतलब मुझे ये समझाओ, फॉरगेट अबाउट द आंसर, रीड पॉइंट नंबर 1 एंड टेल मी हाउ टू प्रोसीड विद दिस पॉइंट नंबर 1। वो लोग ने बोला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन was twice as much of direct material in normal pen। मतलब कौन से पेन का मटेरियल कॉस्ट इज हायर देन कौन से मटेरियल का पेन? डायरेक्ट मटेरियल ऑफ विच पेन इज हायर देन डायरेक्ट मटेरियल ऑफ विच पेन? डायरेक्ट मटेरियल ऑफ सुपर पेन इज higher than direct material of normal pen. So suppose I want to take something as X, तो can you tell me कौन से पेन का हम लोग मटेरियल कॉस्ट को X लेंगे? नॉर्मल पेन का मटेरियल कॉस्ट को X लेंगे, बट माय क्वेश्चन इज व्हाट इज X? Direct material cost of normal pen, but my question is direct material which cost? Because they have said it is direct material cost. The information is not clear कि they are talking about direct material का total cost और direct material का per unit वाला cost। बरोबर है ना? माय क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन फर्स्ट? वो लोग ने आपको बोला है कि सुपर पेन का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन। तो माय क्वेश्चन इज डायरेक्ट मटेरियल मतलब कौन सा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन इज ट्वाइस एज मच of direct material in normal pen के total direct material cost of super pen। अगर मुझे x लेना ही है, अरे आप x को तो डिफाइन करोगे ना, क्या लिखोगे? let direct material of normal pen be x, but direct material what? direct material cost per unit is x के direct material का total cost is x पर यूनिट। मैंने अभी इसके पहले बोला कि मटेरियल के बारे में अगर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो व्हाट विल आई अज्यूम? दिस इंफॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन इज अबाउट पर यूनिट और अबाउट टोटल कॉस्ट पर यूनिट, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल इज अज्यूम टू बी व्हाट इन बिहेवियर? वेरिएबल। सो यहां पे जब वो लोग कॉस्ट बोलते हैं तो आई एम सपोज टू अंडरस्टैंड, व्हाट एम आई सपोज टू अंडरस्टैंड? ये लोग ने बोल दिया सुपर पेन का मटेरियल कॉस्ट is twice of direct material cost of normal pen। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं टेक्स्ट बुक का कॉस्ट है ना सीए इंटर का इज ट्वाइस देन टेक्स्ट बुक का कॉस्ट ऑफ सीए फाउंडेशन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? एम आई टॉकिंग अबाउट टोटल कॉस्ट? क्या आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट पर स्टूडेंट? पर स्टूडेंट, बिकॉज मटेरियल कॉस्ट इज विच कॉस्ट फॉर अस? टेक्स्ट बुक का कॉस्ट इज विच कॉस्ट फॉर अस? वेरिएबल कॉस्ट। तो जब मैं ऐसा स्टेटमेंट पास करता हूं ना कि सीए इंटर का जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ना, मतलब टेक्स्ट बुक का कॉस्ट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू मटेरियल कॉस्ट ऑफ सीए फाउंडेशन, मतलब इट इज अंडरस्टूड कि मैं पर टेक्स्ट बुक का बात कर रहा हूं या रादर पर स्टूडेंट का बात कर रहा हूं। सो दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट पर यूनिट। तो चलो मुझे अभी किसी को तो एक्स लेना है, तो मैं बोलूं किसको एक्स लूं? सबसे पहले नॉर्मल पेन। नॉर्मल पेन का किसको एक्स लूं? टोटल को एक्स लूं कि पर यूनिट को एक्स लूं?
पर यूनिट को हम x लेंगे. I will take this as x. So if this is x, super pen का अमाउंट is 2x. Now मुझे इक्वेशन बनाना है. I will not go with equation method. I will go with logic method. Can you tell me, अगर नॉर्मल पेन का क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज 1,20,000 एंड पर यूनिट इज x, तो नॉर्मल पेन का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? हाउ विल यू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट? इसको हम लोग x को और 1,20,000 को विल यू डिवाइड और विल यू मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई. सो 1,20,000 इंटू x, तो ये कितना हो जाएगा? 1,20,000x. एंड अगर ये 2x है तो सुपर पेन का टोटल डायरेक्ट मटेरियल्स विल बिकम 80,000x. तो अब दो तरीका है. कैन आई से दिस 1,20,000 एंड दिस 80,000 इज टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन एंड सुपर पेन रिस्पेक्टिवली? तो ये 8 lakhs को आई कैन डिवाइड इन दिस रेशियो, दैट इज 1,20,000x इज टू 80,000x, बिकॉज ये टोटल कॉस्ट का रेशियो है. ये 8 लाख क्या है? टोटल कॉस्ट है. टोटल कॉस्ट मतलब इट इज दिस टोटल कॉस्ट प्लस दिस टोटल कॉस्ट ना. तो अगर 8 लाख को मुझे ब्रेक करना है तो मैं कौन से रेशियो में ब्रेक करूं? आई विल ब्रेक इट इन द रेशियो ऑफ 1,20,000x इज टू 80,000x. ये रेशियो में अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको 8 लाख का ब्रेकअप मिल जाएगा. सॉरी 4,80,000 एंड चलो कर ही देते हैं. आई वॉन्ट टू ब्रेक इन दिस रेशियो, मतलब 12:8. 12:8 मतलब दिस इज व्हाट द रेशियो इज 3:2. ओके, 8 lakhs को 3:2 में ब्रेक करो, कितना होगा? 4,80,000 एंड 3,20,000. ओके, कैन यू डू वन मोर स्टेप? आप डिवाइड करो. 4,80,000 डिवाइड बाय 1,20,000. सो कैन वी गेट 4 rupees एंड 3,20,000 डिवाइड बाय 40,000 8 rupees. तो आप चेक कर सकते हो कि सुपर पेन का डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज ट्वाइस. अच्छा, इज क्वेश्चन सेइंग कि पर यूनिट इज ट्वाइस, और इज इट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन दैट इट इज per unit is twice? It is understanding of the question. किधर भी क्वेश्चन में दिया नहीं. मैंने आपको पहले ही बोला था कि they will never specify in the question. वो लोगों ने खाली लिख दिया direct material cost. So whenever I read this statement, first thing I have to answer, भाई तू किसके बारे में बात कर रहा है? पर यूनिट के बारे में बात कर रहा है कि टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है? तो if they are talking about variable cost, then दैट इंफॉर्मेशन इज अबाउट पर यूनिट. और अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है, देखो पॉइंट नंबर 3 पढ़ो. पॉइंट नंबर 3 में प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में क्लियरली बोला है कि दोनों का पर यूनिट सेम है. अच्छा, ऐसा बोला रहता तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर सेम फॉर बोथ द टाइप्स. देन इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज अज्यूम्ड और बिलीव्ड टू बी विच कॉस्ट? प्रोडक्शन ओवरहेड्स का बेस्ट एग्जांपल इज फैक्ट्री रेंट. इफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में कुछ नहीं बोला रहता, आई वुड हैव कंसीडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एज विच कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट. एंड इन दैट सिचुएशन आई वुड हैव टेकन दोनों का टोटल कॉस्ट एज सेम. बट क्लियरली वो लोग ने क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट. नाउ चेक इन पॉइंट नंबर 2. डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन आर 60% ऑफ दोस फॉर सुपर पेन. तो किसका डायरेक्ट वेजेस इज 60% ऑफ किसका डायरेक्ट वेजेस? डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन आर 60% ऑफ दोस फॉर सुपरमैन. लेकिन डायरेक्ट वेजेस व्हाट? टोटल डायरेक्ट वेजेस के डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट? वो किधर लिखा है? तो दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज डायरेक्ट वेजेस इज बिलीव्ड टू बी व्हाट इन बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन? वेरिएबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एंड द सब्जेक्ट, क्योंकि आपको कभी भी नहीं देंगे. ओके, राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1. दिस विल रिक्वायर फुल पेज. वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखो पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल्स. अंडरलाइन दैट. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन let
डायरेक्ट मटेरियल्स पर यूनिट, कहीं पे भी दिया नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है एंड इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल. लेट डायरेक्ट मटेरियल्स पर यूनिट ऑफ नॉर्मल पेन be rupees X. Therefore, direct materials per unit of super pen is equal to rupees 2x. Sorry. ओके, आई हैव रिटन वन फॉर्मूला. देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ये देखो ये मुझे कैसे मिला. 1,20,000 x इज units produced, that is 1,20,000 into cost per unit, that is x. That is what formula I have written. Next line, write down normal pen 1,20,000 into x, that is 1,20,000 x. Super pen is 40,000 into 2x, that is 80,000 x. Next line, write down therefore total cost ratio. मुझे टोटल कॉस्ट 8 लाख को ब्रेक करना है, दैट इज वाई मुझे टोटल कॉस्ट का रेशियो चाहिए. तो टोटल कॉस्ट रेशियो बिटवीन द टू पेन्स इज 1,20,000 x इज टू 80,000 x. That is equal to 3:2. So 8 lakhs into 3/5 is equal to rupees for normal pen and next line 8 lakhs into 2/5 करेक्ट. तो इसका आएगा 3,20,000 फॉर सुपर पेन. कैन यू टेल मी कि हम लोग सिर्फ किसका कॉस्ट शीट बना रहे हैं? सो गो टू कॉस्ट शीट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड. पहले तो आप क्वांटिटी कॉलम में फिनिश क्वांटिटी में यूनिट्स लिखो. सुपर पेन का फिनिश क्वांटिटी में यूनिट्स आएगा 40,000. देन राइट डाउन डायरेक्ट मटेरियल्स. We found out per unit also and total also. तो टोटल में आएगा 3,20,000
पर यूनिट में लिख सकते हो 8. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन डायरेक्ट वेजेस. फॉर दैट वी विल गो टू वर्किंग नोट नंबर 2. चलो डायरेक्ट वेजेस में भी मुझे अज्यूम करना है. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. कैन यू टेल मी कि फॉर विच पेन आई विल अज्यूम एंड व्हाट इज दैट यू हैव अज्यूम. पहले तो चेक करके बताओ कौन से पेन का वेजेस आर हायर देन कौन सा पेन का वेजेस. सुपर पेन का वेजेस आर हायर. ओके, सो whose direct wages are 60% of whose direct wages. नॉर्मल पेन का डायरेक्ट वेजेस क्लियरली लिखा है. डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन. तो इस बार मुझे लेना है y. तो किस पेन का डायरेक्ट वेजेस को आप y लोगे. सुपर पेन का वेजेस को आप क्या लोगे y. लेकिन y क्या है. सुपर पेन का डायरेक्ट वेजेस इज y. So let direct wages of super pen be y is wrong statement. Direct wages what? Total direct wages के direct wages per unit. Direct wages per unit. So write down working note number 2. Direct wages. Underline that. Next line write down let डायरेक्ट वेजेस पर पेन. एक्चुअली यहां पे पर पेन लिखना चाहिए था. ओके, डायरेक्ट वेजेस पर पेन ऑफ सुपर पेन बी ₹y. Next line, therefore, direct wages per pen of normal pen is equal to 60% into y. 60% into y मतलब 0.6y. 60% मतलब 0.6y. ओके, नाउ यहां पे देखो ये तुमने किसका डायरेक्ट वेजेस को y लिया है. विच पेन का डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट को y लिया है. सुपर पेन. तो ये कितना हो गया 0.6y. अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1,20,000 इंटू 0.6y. 1,20,000 इंटू 0.6y इज 72,000y and 40,000 into y will give you 40,000y. क्वेश्चन में चेक करो डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है. 4,48,000 इज नॉर्मल पेन का, सुपर पेन का कि कंबाइंड टोटल. कंबाइंड टोटल. बोलो 4,48,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे. दिस विल बी डिवाइडेड इन विच रेशियो. ये 4,48,000 को मुझे डिवाइड करना है बिटवीन सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन. सो इट विल बी डिवाइडेड इन विच रेशियो. ये वाला रेशियो ना. ओवरऑल बताओ ना, डोंट रिड्यूस इट. विच रेशियो पहले वो बताओ. 72,000y इज टू 40,000y. सो वेरी सिमिलरली जैसे हम लोग ने ये वाला लिखा है वैसे लिखो. टोटल कॉस्ट इक्वल टू units produced into cost per unit. But I would still, if you frame equation, you will get value of x. I am not finding out value of x or y. I want to find out total amount मुझे ढूंढना है. But still that is not wrong.
सो टोटल कॉस्ट पहले करो नॉर्मल पेन, इक्वल टू नॉर्मल पेन का यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 1,20,000 इंटू 0.6y। तो नॉर्मल पेन का टोटल डायरेक्ट वेजेस इज 72,000y एंड सुपर पेन का डायरेक्ट वेजेस विल बी 40,000 यूनिट्स बनाया इंटू y पर यूनिट है, सो 40,000y। therefore total cost ratio equal to 72,000 y is to 40,000 y। इसको रिड्यूस करो, 72:40 को फर्दर रिड्यूस करो, नहीं होता है तो 72:40 में डिवाइड कर दो उसको, 72:40। आई थिंक 8 के टेबल से आएगा 9:5। यस और नो? 9 के टेबल 8 में जाएगा ना, 9:5। चेक करो, 9:5। It's very similar presentation, therefore 4,48,000 चलो कैलकुलेट करो। Is it 2,88,000? 2,88,000 for which pen? For normal pen. $2 lakh? नहीं, 1,60,000 for super pen। चलो गो टू कॉस्ट शीट, डायरेक्ट वेजेस में आएगा 1,60,000 विच विल बी डिवाइडेड बाय 40,000। 1,60,000 को डिवाइड बाय 40 करो, आई थिंक यू शुड गेट 4। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में, सो इसको ऐड करो, you will get prime cost is 12 rupees। next line, add production overheads। चलो go to working note 3। what is information given about production overheads? production overheads में is the information clearly given whether it is regarding total or whether it is regarding per unit? per unit clearly बोला है कि production overheads per unit was same for both the types। can you tell me how much is total production overhead? 1,92,000। so write down प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्किंग नोट नंबर 3, अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन में लिखो कॉस्ट पर यूनिट और पर पेन, व्हाटएवर, कॉस्ट पर यूनिट
is same for both. Same line equal to रुपीज 1,92,000. कैन यू टेल मी, मुझे ये 1,92,000 को पर यूनिट में कन्वर्ट करना है एंड दोनों का पर यूनिट सेम है, तो 1,92,000 शुड बी डिवाइडेड बाय किसका यूनिट्स, सुपर पेन का कि नॉर्मल पेन का? दोनों का कॉस्ट पर यूनिट सेम है 1,92,000. मुझे ये पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 1,92,000 शुड बी डिवाइडेड बाय किसका यूनिट, सुपर पेन के नॉर्मल पेन? तो खाली सुपर पेन का पर यूनिट मिलेगा ना. अरे कम ऑन, इट इज वेरी सिंपल. 1,92,000 टोटल है और दोनों का पर यूनिट सेम है, तो 1,92,000 शुड बी डिवाइडेड बाय किसका यूनिट्स, टोटल. दोनों का 1,60,000 से डिवाइड करना चाहिए, सो 1,92,000 शुड बी डिवाइडेड बाय हाउ मेनी यूनिट्स, 1,60,000. दैट इज 1,20,000 नॉर्मल पेन का प्लस 40,000 सुपर पेन का. That is equal to rupees 1.2 per unit. मतलब सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन दोनों का पर यूनिट सेम है, तो इसके लिए हम लोग ने डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड कर दिया. सो मतलब सिंपल लैंग्वेज में सी वेदर यू अंडरस्टैंड. कैन वी से दिस 1,92,000 इज टोटल फॉर 1,60,000 पेन्स. अब फैक्ट्री में टोटल 1,60,000 पेन्स बना है, तो डिवाइडेड बाय 1,60,000 पेन्स, तो 1.2 पर यूनिट. सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहां पे लिखो 1.2. नाउ मल्टीप्लाई दिस 1.2 बाय 40,000, 48,000. पहले ऐड करो, सो यू गेट 5,28,000, 13.2. नाउ लिसन केयरफुली. नॉर्मली इसको हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बुलाते हैं. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद फॉर्मेट में क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बट इट इज नॉट देयर, तो डायरेक्टली हम इसको क्या बुलाएंगे, फैक्ट्री कॉस्ट. Okay, now listen carefully. Factory cost के बाद there are 5 special items. Number 1, quality control. Check करो, do you have quality control? No. Do you have next one, research and development? Okay, now listen carefully. Do you have administration overheads related to production activities? Then they have given administrative overhead. Is it related to production activities? How did you come to know? Yes, because it is 200% of डायरेक्ट लेबर. दैट इज वाई उसको हम अज्यूम कर रहे हैं. अल्टीमेटली इट इज अजम्पशन, नो वेर इट इज गिवन, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी. सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ब्रैकेट में लिखो रिलेटेड टू production. There only next line. Okay, how much is direct labor for super pen? डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस कितना है, 1,60,000, उसका 200%, 3,20,000. करेक्ट. डिवाइड करो बाय 40,000, you get 8 rupees. Okay, now total 8 lakhs 48,000. This is going to be called as, you don't have sale of scrap, you don't have primary packing,
तो इसको हम लोग बुलाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ इफ यू रिकलेक्ट, आई हैड ऑलवेज टोल्ड कि जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाते हो, किसको नीचे लेके आओगे? ऑन यूनिट्स को नीचे लेके आओ in front of cost of production. That is 40,000. Can you please check after cost of production? पहले तो बोलो cost of production के बाद format में क्या आता है? तो do you have opening stock of finished goods? Check properly, हाँ. Okay. Do you have closing stock of finished goods? Is it so difficult to find out closing stock of finished goods? How will you find out closing stock of finished goods? अरे प्रोड्यूस कितना है? करेक्ट, प्रोड्यूस्ड इज 40,000, उसमें से कितना बेच दिया? 36. So how much is closing stock? 4,000. So write down next line less closing stock. यूनिट्स कॉलम में लिखो 4,000. चलो रिकलेक्ट फॉर द लास्ट टाइम. अभी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे. क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड यूजिंग विच मेथड? FIFO. In fact, ये क्वेश्चन में FIFO weighted average doesn't matter because we don't have opening stock. So can you tell me this 4,000 will be valued at how much per pen? 21.2. मतलब इसमें तुम ये assumption कर रहे हो कि closing stock is valued at cost of production, because if nothing is given it will be valued at cost of production. 21.2, 84,800. इसको ब्रैकेट में रखो. Only rupees column and units column will be subtracted. Okay, subtract 63 and per unit mathematically 21.2 ही आएगा. This is cost of goods sold. चलो, we have reached up to cost of goods sold. से इसके लिए format याद होना चाहिए. Every question you cannot sit and recollect or keep on recollecting the format. आपको format अच्छे से याद होना चाहिए. चलो, cost of goods sold के बाद normally we add which overheads? Do you have administrative one related to production? Sorry, general? No. Next is which overheads? So do you have selling cost? Yes. So पहले write down next line, add selling and distribution overheads. Add selling and distribution overheads. Underline that. नेक्स्ट लाइन लिखो सेलिंग कॉस्ट. अच्छा, सेलिंग कॉस्ट में टोटल दिया है कि पर पेन दिया है? पर पेन. हाउ मच? 1 रुपी. तो 1 रुपी विल कम इन विच कॉलम? पर यूनिट. ये 1 को आप कितने पेन्स से मल्टीप्लाई करोगे? 36,000. दैट इज सोल्ड. सेलिंग कॉस्ट विल बी इनकर्ड ऑन क्वांटिटी दैट इज सोल्ड. अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग आज लिखेंगे अभी थोड़ी देर में. यू सी हियर केयरफुली, अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आप चेक करो, नोटिस करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय मतलब प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी. लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय सेल्स और सोल्ड क्वांटिटी. वो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे. सेलिंग कॉस्ट 36,000 इंटू 1, दैट इज 36,000. Now only these two columns will be added. 763,200 plus 36,000. 7,99,200.
यहाँ पे it is 22.2. Leave one line, write down sales, or you can write add profit, next line sales. चेक करो क्वेश्चन में. सी समटाइम्स दे विल गिव यू प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन, समटाइम्स दे विल गिव यू सेल्स का इंफॉर्मेशन. चेक करो इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन यू प्रॉफिट इंफॉर्मेशन और सेल्स का इंफॉर्मेशन. सेल्स में भी दे हैव गिवन यू टोटल सेल्स और हैव दे गिवन यू पर यूनिट. तो पर पेन कितने में बेचेंगे, हाउ मच दे आर सेलिंग इट फॉर, 30 रुपीज. सेल्स में पर पेन में आएगा 30. हाउ मेनी पेन्स आर सोल्ड, so multiply 36,000 into 30, 10,80,000. So calculate profit. 2,80,000. 7.8. As I told, इनर कॉलम कुछ काम का नहीं था, इवन इफ यू हैड प्रिपेयर्ड तो खाली रहता. चलो क्विकली कम टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऑलरेडी वी हैव रिटन 1, दैट इज रिगार्डिंग चेंज इन फॉर्मेट. अब हम पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हैं, विच आई जस्ट नाउ एक्सप्लेन. इनफैक्ट उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट लिखो. पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू total cost divided by quantity. Cost per unit equal to total cost divided by quantity. Point number 3, point number 3 में लिखो finished quantity column. Finished quantity column. Finished quantity column, underline that. Next line, A, up to cost of production. Up to cost of production. Comma, quantity refers to, up to cost of production, quantity refers to production quantity. देखो जो भी आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्वांटिटी यूज करने का. नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑनवर्ड्स. फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑनवर्ड्स. फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑनवर्ड्स, कॉमा, quantity refers to sales quantity. Next point number, what is point number 4? This is very important point जो हम लोग लिख रहे हैं. Valuation of closing stock of finished goods. Valuation of closing stock of finished goods. Underline that. Next line, in absence of information. In absence of information, कॉमा. नेक्स्ट लाइन, अच्छा अभी ए और बी करके लिखो. पॉइंट नंबर ए, FIFO मेथड इज टू बी फॉलोड इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन.
FIFO method is to be followed. Next line, point number B. It should be valued at cost of production. It should be valued at cost of production. ओके, लास्ट पॉइंट नंबर व्हाटएवर। अभी ये पॉइंट लिखने के लिए मेरे को कम से कम 10 लाइन चाहिए। है तुम्हारे पास 10 लाइन? यू कैन गो देयर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नीचे यू मे हैव स्पेस। इधर नहीं, इधर नहीं, उधर। हाँ वहाँ पे है ना जगह, उधर लिखो। सी दिस इन, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं ना, इज हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो पर यूनिट के बारे में है कि टोटल कॉस्ट के बारे में। वो लोग आपको क्वेश्चन में कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा? दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। सो राइट डाउन व्हाट इज पॉइंट नंबर गोइंग ऑन 5। इसमें लिखो केस 1, इफ इंफॉर्मेशन about a particular cost, if information about a particular cost is clear, if information about particular cost is clear as to whether it is per unit information or total cost information, comma total cost information, comma then follow it, then follow it। देखो अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है कि वो पर यूनिट का इंफॉर्मेशन, जैसे ये क्वेश्चन में वी हैव सॉल्व प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्लियरली इट इज रिटन दैट प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज सेम, तो फिर अपना दिमाग लगाना नहीं है, जो बोला है वो फॉलो करो। एक लाइन छोड़ के केस 2, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर देन, if the information is not clear, comma then, if the information is not clear then, next line point number A, direct materials, comma direct labor and direct expenses are considered to be variable in behavior and hence the cost information is considered to be, chalo complete the statement, the cost information is considered to be, बोलो which information? per unit information। तो ये तीनों कॉस्ट के बारे में अगर कोई आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता है बट वो इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि वेदर वो पर यूनिट के बारे में है कि टोटल कॉस्ट के बारे में है, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये तीनों के बारे में दिया है, तो वो इंफॉर्मेशन पर यूनिट के बारे में। पॉइंट नंबर बी, फैक्ट्री ओवरहेड्स
and administration overheads. Factory overheads and administration overheads are considered to be fixed in behavior. Factory overheads and administration overheads are considered to be fixed in behavior. And hence, cost information is considered to be total cost information. Okay, so with this we have completed this chapter. Homework section में जो भी homework बाकी है, this question I will solve. Question 2 homework का आप लोग मत करना. Page number 66. Not today. I will do it with some other chapter. Question number 2 on page number 66. I will do this question. You will not solve this. ये अच्छा question है. I don't know why it is put in homework. ये मैं करवाऊंगा. क्वेश्चन 3 यू कैन सॉल्व. क्वेश्चन 3 है ना, इज सिमिलर टू वो कल हम लोग ने क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोग ने रॉ मटेरियल परचेज फाइंड आउट किया था एक्स लेके और फिर उसका कॉस्ट शीट तुमने होमवर्क किया था, ये वाला क्वेश्चन 5. इट इज आइडेंटिकल. क्वेश्चन 5 ऑफ क्लास वर्क एंड क्वेश्चन 3 ऑफ होमवर्क. सो क्वेश्चन 3 ऑफ होमवर्क यू कैन डू इट ऑन योर ओन. दिस इज अनदर क्वेश्चन यू कैन डू. Question 4 भी try करो, it is a good question. Question 5 also is very simple. You can again try this question, it is easy. And class test का question 2 we have already done. ये class work का question 2 and this is same. So I don't think more, only 2 or 3 questions are homework. वो एक question मैं solve करवाऊंगा. I don't know, mostly next week we don't have lecture. So please ये practice करो. नहीं करोगे तो संडे टेस्ट डाल दूंगा कॉस्ट शीट का. सॉरी, क्लास वर्क का तो वी हैव डन नो ऑल. खाली क्वेश्चन 1 and 3 इज होमवर्क. क्लास वर्क का 1 and 3 वाज आई हैड गिवन एज होमवर्क. Or else rest other questions I have solved. Whenever is next lecture, we will start with new topic.